Hello, dear students, all those who are appearing for the 12th, forthcoming 12th board examination. I know you all must have prepared thoroughly through the NCRT textbook and the NCRT exemplar. And for practice, that is revision part, you must have solved the practice question papers that is available in the net. I'm trying to help you out with the revision part through through explaining the question solutions of one practice question paper. Okay. Uh, how I'll deal with each question, just go through it. It will help you to revise those properties, and definitely there will be a difference in your score. Fine. So without wasting much of time, I'll start with the first question. The first question is based on function. It is based on a graph. The graph, read the question. It says that there is a graph which is hidden behind this star. That is some part, curve is there behind this star. Okay? The curve is not defined. That is, no part of the curve exists between -1 and 1. It is defined for all values from 1 to infinity and minus infinity to 1, -1, but not between -1 and 1. तो आपको ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होना होगा, वो कैसे आप सेलेक्ट करेंगे? करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Some questions require concept, some questions require computation. तो ये क्वेश्चन कंप्यूटेशन, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू द डेफिनेशन, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन। डेफिनेशन से कैसे जाएंगे? ये है कि सबसे पहले कौन सा फंक्शन -1 और 1 के बीच में नहीं यूज करते हैं, दैट इज x इज नॉट -1 and 1, दैट इज sec inverse x and a cosec inverse x। ये दो फंक्शंस हैं which is not defined between -1 and 1, बट हमें तो एक ही चाहिए। तो आगे बढ़ते अपन, इसमें सम पोर्शन इट इज गिवन। नाउ व्हाट एल्स इज दिस इंफॉर्मेशन, कि आपको दिख रहा है कि कर्व जो है ऑन द y पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y में है, दैट इज इट इज ऑल अबाउट x एक्सिस, इज नथिंग बिलो x एक्सिस, दैट इज रेंज जो है नेगेटिव y नहीं है। तो इन दो फंक्शंस में कौन से ऐसे फंक्शंस है जिसका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रेंज पॉजिटिव वैल्यूज में है, नेगेटिव वैल्यूज में नहीं है? वो है sec inverse x. So the correct answer that we have is sec inverse x. ठीक है? तो इसको प्रॉपर्टी यूज करके हम इमीडिएटली आंसर कर सकते हैं, नो वर्किंग नथिंग। तो हम आंसर कैसे करेंगे वो भी आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। आंसर करने का तरीका है कि यू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एंड राइट इट्स ऑप्शन बिसाइड्स इट्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप उस ऑप्शन में क्या एक्सप्लेनेशन है वो भी प्लीज लिखिए। दैट मेक्स द एग्जामिनर इजियर। तो आप प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है? So the first answer is C part, which is second verse. Now let me move on to the next question. The next question is question which is based on matrix. Yes, P and Q are two matrices where P plus Q and PQ both are defined. अब दो matrices का है operations हैं, एक addition operation है और दूसरा है multiplication operation. अब दोनों ऑपरेशन करने के एक कंडीशन होता है, नॉट एनी ऑर्डर मैट्रिसेस कैन बी एडेड नॉर मल्टीप्लाइड, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो मैट्रिक्स एडिशन होना है तो देन इट इज टू हैव द सेम ऑर्डर, इसका नंबर ऑफ रोज m है, इसका कॉलम n है, इसका भी वही सेम होना चाहिए m/n। नाउ यही हम कंटिन्यू अगर इसमें करेंगे तो जस्ट सी वेदर इट्स डिफाइंड और नॉट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं, चेक करिए। मल्टीप्लिकेशन का क्या है कंडीशन, कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट एंड द नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड दोनों सेम होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये कंडीशन तो वैलिड नहीं है। तो व्हाट कंडीशन शुड वी हैव, दैट इज अगर हमें डिफाइन करना है, दैट इज इफ सपोज पी क्यू इज डिफाइंड, then we must have n and m equal, n equal to m होगा तभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हैं। So finally what is the resultant of the two conditions? It says that the matrices should have a same order as well as it should be a square matrix. अब आप देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कैन वी नॉट डिफाइन इट गलती से? ओके, ठीक है, इट शुड हैव बीन m, तो इट इज m/m, और ये क्यू मैट्रिक्स रहेगा दैट इज आल्सो m/m। So we have the addition and
from multiplication defined only when they are both and है ये both only when they are square matrix and that too of same order. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? It is B option. ठीक है, तो B option says we have the addition as well as the multiplication defined. ठीक है, now let's move the third question. The third question is determinant of this matrix. That is हमें एक मैट्रिक्स दिया, उसका determinant evaluate करना है. Under which condition will the determinant be zero? अब ये क्वेश्चन है, ये है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो जीरो कब? नाउ आप लोग को एक चीज याद होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट हम इवैल्यूएट कैसे करते हैं. हाउ डू वी इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट? वी टेक एनी रो. अच्छा, अब इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है ये. दैट मीन्स आपको क्या ये पूरा वर्कआउट करना है, आपको क्या पूरा एक्सप्रेशन लिखना है क्या? देखते हैं. अब इसमें क्या ऑप्शंस में आपको क्या दिख रहा है? देयर आर थ्री ऑप्शंस हियर एंड देन फाइनली आंसर इज, दैट इज यू हैव टू सेलेक्ट वन फ्रॉम ए बी सी डी. One from ABCD says that it is either one statement or there are three statements which is corresponding to this options A, B, C, D. अब इसको कैसे आंसर करें? इसमें तो दिख रहा है कि दो तीन ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं. आपको ये पूरे स्टेटमेंट्स जो ऑप्शनल स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं वो आपको पूरा समझना पड़ेगा. Only then you can answer this options. You can select correct option. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि A minus 2B, B minus 2 Q and C minus 2R, ये तीनों जो है the difference जो है that is equal to 0. And second statement says that x y z तीनों ही equal है. That means एक रो का एलिमेंट पूरा ही जीरो हो गया. तो अगर एक रो का एलिमेंट जीरो है तो लेट मी राइट द स्टेट एक्सपेंशन ऑफ दिस थ्रू द थर्ड रो. दैट इज x is multiplied to, का मल्टीप्लाई क्या होगा? व्हाट इज इट्स कोफैक्टर? इट इज BR minus CQ. Then minus cofactor निकाल रहे हैं y times AR minus PC plus z times AQ minus BP. फाइन. अब इसको करने से सबसे पहला ये जो स्टेटमेंट है, isn't it valid? Yes, क्योंकि अगर हमने x y z 0 ले लिया है तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू जो है एड अप करके 0 ही आएगा. Now first option क्या है? A equal to 2P, B equal to 2Q, C equal to 2R, क्योंकि they are all equal to zeros. So you have A and P, B and Q, C and R, they are all equal to 2. So what is the meaning of this statement? It says that they are proportional. So let us rewrite this. इसमें rewrite करके देखते हैं. That is, I am changing A, B, C to PQR. It is 2 times. So 2 तो हम पहले ही बाहर निकाल लेते. It is 2 times. So what do we get inside the bracket? B is QR. QR. Fine. Minus C को change किया हमने. R 2R हो जाएगा. This is RQ. So what are we getting? ये जो value आ रहा है minus 2 times 2 को हम बाहर ही निकाल देते. A is P 2P, that is P times R हो गया. Now P times C is 2 times R, तो ये R हो गया. देखो यहाँ पे 0 आ गया. Next is A is again PR, तो PQ हो गया. B is QR, 2 times Q, so this is QP हो गया. तो देखिए आप, it is automatically reducing to 0. So therefore this also is a true statement. That is A equal to 2PP. That means अगर हमारा कोई भी दो rows from this, what is the conclusion? ये आपको याद रखना है कि any two rows or columns, it is not rows itself, it is column wise also. जो मैं रो के लिए बोल रही हूँ वो कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है, ये आपको याद रखना है. तो अगर दो रोज के एलिमेंट्स आपस में प्रोपोर्शन है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. एनी रो, कोई भी एक रो 0 हो तो भी 0 होगा. एंड द थर्ड कंडीशन सेम चीज, ABC प्रोपोर्शनल टू XYZ, दैट इज वो तीनों रेशियो एक दूसरे से रेशियो में है. तो इसका मतलब द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 अंडर ऑल द थ्री कंडीशंस. तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? डी ऑप्शन. द आंसर इज डी ऑप्शन. तो आप लोग को ये प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट का कि एनी रो 0 हो, एलिमेंट 0 है और एनी टू रोज एलिमेंट आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0. अब एक दूसरा क्वेश्चन, फिर से डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन है कि आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इवैल्यूएट करना है विद द कंडीशन दैट इज
ए बी सी 3 नंबर्स जो दिए हैं ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट इज 2। अब इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। अब बच्चों देखो ये एक्चुअली इस साल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो आपको बिना प्रॉपर्टीज यूज किए ही करना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन है, ये आपको याद दिला रही हूँ। मैंने शुरू में कहा था कि देर आर सर्टेन क्वेश्चंस विच रिक्वायर लेंथी कैलकुलेशंस, उनमें से ये एक क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन होल्ड पे रखना है। दैट इज, आप पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप स्पेस छोड़ दीजिए। जहां भी ये अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें से कम 5 to 6 पेज लाइंस छोड़ दीजिए। उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपके पास सफिशिएंट पेपर इस तरह से लेंथ वाइज रहता है, तो आप जो भी मैटर आपको लग रहा है कि कंप्लीट नहीं होगा 4-5 लाइन में, यू कैन लीव फर्दर लाइन्स, और एल्स 3-4 लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। एग्जामिनर सब चीज बहुत क्लियरली देखते हैं। आप बिल्कुल मत घबराइए, पेपर बहुत अच्छे से इवेल्युएट होते हैं, एक टीचर से नहीं 2 टीचर्स चेक करते हैं फाइनली। तो आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि अगर एक ही क्वेश्चन को अगर हमने पेज को डिवाइड करके करेंगे तो कुछ गड़बड़ कभी नहीं होगा। टीचर्स अच्छे से इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन को एक तरीका ये है कि आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करिए। आप एक्सपैंड करेंगे मतलब आपका एक्सपेंशन का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था ना मैंने, इट इज 2a टाइम्स, मैंने फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रही तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc, दैट इज विथ फर्स्ट, देन माइनस इट इज 2a अगेन, 2a टाइम्स, ये हो जाएगा 3bc, इट इज 3bc माइनस 6ba माइनस 9b स्क्वायर। फाइन, ये तो अभी सेकेंड, अभी अब लास्ट एलिमेंट दैट इज 3b प्लस c टाइम्स दिस इज 3bc माइनस, अब ये लेकिन बाइनोमियल का मल्टीप्लीकेशन है, जरा आराम से एक एक स्टेटमेंट लेके आराम से करिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं साथ साथ कर रही इसलिए मैं लिख रही हूँ। इट इज -4a² -4a² -6ab, then with c से it will be -2ac -3bc, ठीक है। तो ये है, अब इसमें कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, तो एक सिंप्लीफिकेशन ये दिख रहा है कि मैं 2a इसका कॉमन ले सकती हूँ, तो ठीक है देख लेती हूँ 2a, फिर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है बट हम कर सकते, ठीक है। अब इसमें एक और चीज कॉमन दिख रहा है, c कॉमन दिख रहा है और इधर b कॉमन दिख रहा है। तो लेट अस नॉट टच दिस नाउ, लेट अस गो फर्दर विद दिस 2ac प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc, अब इसमें से -3bc आ रहा है ये, प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, ये है अपना फर्स्ट, प्लस अब ये 3b प्लस c है। आप लोग देखिए थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बट अपने पास ऑप्शन नहीं है, 3bc गेट्स कैंसल और 4a² ऑल नेगेटिव में यहाँ माइनस, और उसमें एक और चीज दिख रहा है 2a भी कॉमन दिख रहा है, तो आई एम टेकिंग दैट 2a कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट इज 2a प्लस 3b प्लस दिस विल बी c, ये हुआ इसका एक्सप्रेशन। अब इसमें से भी अगर आपने एक और 2a कॉमन ले लिया एंड देन व्हेन गो फॉर द फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आपको पहले ये खोलना पड़ेगा, तो इतना लेंथी कैलकुलेशंस है इसमें। तो आप 2a लिखिए, मैं फर्दर स्टेप, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ऐसे कर एक एक स्टेप को आप आराम से लिखिए। दिस इज 2ac प्लस c स्क्वायर माइनस 3bc और 3bc मिला के 6bc हो गया, प्लस 6ab प्लस 9a², ठीक है। अब उसके नीचे वाला टर्म में -2a बाहर निकाला तो ऑल टर्म्स विल बी, ऑल क्वांटिटीज विल बी नेगेटिव बिकॉज ये माइनस बाहर निकाल दिया। अब मैं इसका सब्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लीकेशन भी इसके नीचे ही लिख रही हूँ। तो सबसे पहला वाला टर्म आएगा -6ab, तो 6ab के नीचे लिखेंगे हम, इट इज -6ab 6a, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इज 3b इज मल्टीप्लाइड टू c, तो 3b दैट इज वो हो जाएगा -3bc। अब नेक्स्ट इज सॉरी ये आएगा, दिस इज -6ab हो गया, दैट इज 9b² आ जाएगा, दैट इज -9b² हो गया, और -3bc। नाउ c के साथ 2a का, so it is -2ac, then you have plus 3bc, so plus 3bc,
जो जो टर्म्स इसके साथ है उसके साथ लिखते एंड माइनस सी स्क्वायर, इट इज माइनस सी स्क्वायर। अब आप देखिए क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, 2ac getting cancelled, c square getting cancelled, this is 3bc getting cancelled, 6ab getting cancelled, 9bc getting cancelled. हालांकि टाइम लगा है बट स्टिल वी आर एबल टू गेट इट, इट इज -12, ये आएगा -12, इट इज -12 abc। तो abc आप चेक करके देख लीजिए वैल्यूज गलती है कि देख लो। तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड सो दे, ये मैंने एक्चुअली वर्कआउट करके रखा है प्रॉपर्टीज यूज करके। प्रॉपर्टीज का ये है, आपके पास है ही नहीं सिलेबस में बट स्टिल हैव मेड इट। जीरोस यूज करने के लिए प्रॉपर्टीज यूज करते हैं हम, ताकि कन्वर्ट दिस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो टू ए आप रहने दीजिए, आप लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज this one, that is question based on continuity. Now what is the condition for continuity? Continuity का condition ये है कि limit for any point, that is limit x tends to a fx and the value of the function at a, ये दोनों same होना चाहिए। तो क्वेश्चन इज द फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, देन यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। हम ये स्टेटमेंट वापस कॉपी करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन वे यू हैव टू वर्क आउट। आप इसी क्वेश्चन को जहां आंसर करने का सोचा है उसके साइड में इसको वर्कआउट करिए। तो आप क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 2x अपॉन 8x, फाइन, and that is equal to f of 0, that is equal to k. तो अब हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट, लिमिट ऑफ साइन फंक्शन कैसा है याद करके देखिए बच्चों, साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंस टू 0, इट्स वैल्यू इज 1। तो अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है साइन x अपॉन x साइन ऑफ 0 अपॉन द सेम 0, ठीक है, जो 0 साइन के साथ अटैच्ड है वही सेम 0, जैसे साइन ऑफ 2x है, तो वी रिक्वायर 2x हियर। तो हम वो 2x कहाँ से लाएंगे, हम 2x ला सकते हैं ना 8 से। वी कैन रीराइट दिस एज 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 इसलिए बाहर निकाला मैंने क्योंकि उसमें कोई x वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको अलग ही कर दिया। नाउ द लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी, ये पूरा लिमिट 1 हो गया, तो k का वैल्यू क्या हो गया, 1 अपॉन 4, सो द ऑप्शन इज 1 अपॉन। फाइन। The next question, integration of 1 upon x square upon cos square x। जैसे ही आपने अपॉन cos square x में, तभी तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्चुअली 1 अपॉन cos square नहीं होगा, इट इज 1 sec square 1 upon x dx। और नेक्स्ट थिंग, आपको क्वेश्चन देख के लग रहा है इट इज मल्टीप्लीकेशन, दो फंक्शन से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में अनलेस until it is two different functions multiplication, we should not see it as a multiplication। आपको उस एक्सप्रेशन को you will have to take up a suitable substitution to convert it into a standard form। Standard form means basically आपको यहाँ सेक्स स्क्वायर दिख रहा है, सेक्स स्क्वायर फंक्शन दिख रहा है, सेक्स स्क्वायर के साथ अटैच्ड 1 अपॉन एक्स है, सेक्स स्क्वायर ऑफ 1 अपॉन एक्स है। अगर आप 1 अपॉन एक्स के साथ एक्स की जगह अगर आप इट हैड इट बीन एक्स स्क्वायर एक्स, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते थे ना। तो दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स का रिप्लेसमेंट, दैट इज वी हैव टू रिप्लेस 1 अपॉन एक्स। तो अगर हमने 1 अपॉन एक्स को सब्सटीट्यूट किया, रिप्लेसमेंट मीन सब्सटीट्यूट किया, देन व्हाट डू वी गेट फर्दर, इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो इससे ये एक्सप्रेशन क्या कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx गेट्स अटैच्ड टू dt, वो dt हो गया, or 6 minus of dt, sorry, it is minus of dt, and this the rest becomes x squared t। ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक फंक्शन है ये। इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर टी क्या होता है, इट इज tan, तो इट इज माइनस ऑफ tan t। अब t क्या था अपना, रीराइट इट, t था अपना 1 अपॉन x प्लस अ कांस्टेंट, कांस्टेंट यूजुअली हम प्लस c लिखते हैं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आप देखिए इसमें से एक ही ऑप्शन बी ही ऑप्शन दिख रहा है जहां माइनस tan ऑफ 1 अपॉन x है, बट उसके साथ आपको माइनस बी एस कांस्टेंट दिख रहा है, डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि प्लस और माइनस इट्स द सेम थिंग। So which is the correct option? It is B. Right? Now we move on to the next question. Now the next question is integration of a definite function. That is, it's an indefinite integral. Definite integral मतलब आपको इसका लिमिट यूज करना पड़ेगा -1 to 1। बट फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन इज एक्चुअली मॉडुलस। तो सबसे पहले हमें मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करना है।
How is it redefined? 4x minus x square will be positive. Now, if 4x minus x square actually you have to factorize it. So it is factored as x times 4 minus x. Okay? It is x times 4 minus x. So what does this be equal to? It will be x times 4 minus x. That is, it is going to be positive if it, that is ये expression जो positive है. So this is a function which is positive. ये expression positive होना चाहिए. X times 4 minus x. Where will it be positive? ये कहाँ हम ढूंढेंगे? इसको ढूंढने का एक the best तरीका है make use of number line. ठीक है? I'll make this number line here. And what I do is I'll be marking the zeros of this polynomial 4x minus x square. ये zeros क्या क्या है? 0 and 4. So let us mark it. एक 0 है and 4 है. So as per this information, we have that this function will be positive if x lies between minus infinity to 0 and 4 to infinity. But ये 4 minus x, this has to be greater than 0. This has to be greater than equal to 0 means it is x times 4, x minus 4, which is going to be less than equal to 0. So where is this negative? Again, ये चीज हमें number line में ये बताता है कि left से we move from right to left and start marking the regions plus and minus. So this region is plus, this region will be minus, this region will be plus. Now, as per this condition, it says that we look for a value of x where it is, that is, it is x times 4 minus x if x belongs to, this is 0 to 4. 0 to 4 में positive function is x times 4 minus x and it is minus of x times 4 minus x if it belongs to minus infinity to 0 and union 4 to infinity. ठीक है? अब क्वेश्चन हमारा कहाँ से कहाँ तक है? क्वेश्चन हैज अ लिमिट, इट इज फ्रॉम -1 to 1. दैट मीन्स हमें बियॉन्ड इसका देखना ही नहीं है. So what will, let me write this as I equal. If I write this as I equal to, what will this evaluation be? I is equal to -1 to 0. It is -1 to 0 कौन सा पार्ट है ये? This is positive part. Positive part कहाँ पर अपना है ये अपना? This is where x is 0 minus infinity, तो ये क्या है? Minus of. It is minus of 4x. So that means I can write it as x square minus 4x. Fine. Plus this is from 1 to 0 to 1, sorry, it is 0 to 1, it will be, that will be x square minus, this will be x square minus, it's x times 4 minus x, so that is 4x minus, it is 4x minus, it is read as x times 4 minus x है ना, कहाँ positive है? It is 4x minus x square dx. Fine. तो हमें दोनों functions को separately integrate करना है. So when you integrate it separately, we get this as x cube upon 3 minus 4x x square upon 2, that is 2x. दोनों का limit is from -1 to 0 and the second expression it is 0 to, sorry, second expression को भी integrate करेंगे हम. तो integrate करेंगे तो what we get is 4x square, that is 2x square minus x cube upon 3 between the limit 0 to 1. अब हम इसका वैल्यू इवेल्युएट करते हैं. तो फर्स्ट आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0 इन इट. x 0 दिया तो पूरा ही टोटली 0 हो जाएगा. तो इट्स वैल्यू इज 0 minus. Now we'll put x as -1. When you put x as -1, this expression becomes -1 upon 3 and minus of 2x makes it +2. Fine. And the next statement, it is x is equal to 1. So replace it as 1. So you get 2 minus 1 upon 3 minus x is equal to 0. तो पूरा ही 0 हो गया. So what do we read the final answer? 2 plus, that is -1 plus 1 upon 3 जो है वो cancel हो गया. Final answer is 4. So the fourth option that you have, that is e is equal to 4, will be the correct option. Fine. So shall I move on to the next question? It is question number 8. Now the question number 8 says that which of the following is closest to the area under the parabola y equal to 4x square bounded by the line x equal x-axis and the lines x equal to -1 and x equal to -2. Only this part was given. I have made this graph. I'm trying to show it how to, because इस question के लिए आपको ये graph बनाना पड़ेगा. तभी आपको समझ में आएगा कि ये इंटीग्रेशन किसका है. This is it is the question based on definite integral. तो आपको
इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन से, एरिया निकालना है इंटीग्रेशन से। तो आप जब तक कर्व नहीं ड्रॉ करेंगे, तब तक कर्व बनाएँगे नहीं या रीजन आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक आपको लिमिट कौन-सा लगाना नहीं समझ में आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इट इज़ y इक्वल टू 4x स्क्वायर इज़ अ पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, x इक्वल टू -2 ये लाइन है और x इक्वल टू -1 आप लोग को दिख रहा है ये लाइन। तो एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, x एक्सिस ये लाइन है एंड द कर्व, ये सब के बीच का एरिया एक्चुअली ये पार्ट आ रहा है। देखिए ये शेडेड पार्ट दिख रहा है आपको, इतना पार्ट, ठीक है? तो दिस रीजन, इस रीजन का एरिया कैसे निकालते हैं? रिमेंबर द डेफिनेशन एरिया, मैं इसका नाम डाल देती हूँ ए बी सी डी एंड इट्स नॉट अ स्ट्रेट सो विल नेम दिस, इट्स एरिया ऑफ ए बी सी डी पी ए, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन between -2 to -1 of the function 4x square. तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है आपने को। व्हाट इज द आंसर? इट इज 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब, क्यूब अपॉन 3 होता है, सो इट इज एक्स क्यूब। एक्स क्यूब हमें पूरा स्टेप्स दिखाना नहीं है बिकॉज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू, है ना? हम डायरेक्टली डाल देते हैं वैल्यू एंड सी व्हाट इज द नियरेस्ट वैल्यू, दैट इज इट इज नॉट एग्जैक्टली मेंशनड, हमें इसका नियरेस्ट वैल्यू ढूंढना है। तो ये तो -1 होता है, ये -8 होगा, दैट विल मेक इट 10 + 8 दैट इज 7 हो जाएगा। 7 टाइम्स 4 अपॉन 3, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7 टाइम्स 4 इज 28, तो 28 अपॉन 3, 28 अपॉन 3 इज अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 9 है, 9 से थोड़ा बड़ा है बट लेस देन 12 है, तो विच इज क्लोजर? इट इज almost equivalent to 9 squares, so we have the answer as 9 squares unit. Fine. The next question, which of the following differential equation has order 2 and degree 3? अब इसमें से you have to select the one. फर्स्ट वाला ऑर्डर, फर्स्ट वाला दिख रहा है d2y upon dx square means it has been differentiated. Order 2 मतलब the number of times the expression has been differentiated. ठीक है? And the highest order, whatever is the index, इसका इंडेक्स क्या है? डिग्री, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री dy on dx जो दिया है इसका डिग्री 3 है, बट वी लुक एट द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हाइएस्ट ऑर्डर 2 है, 2 का डिग्री 1 है, तो इस एक्सप्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इज 2 बट डिग्री इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन का ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज 3। फाइन, क्योंकि d2y अपॉन dx होल क्यूब है तो डिग्री उसका 3 हुआ है, dy ऑन dx डिग्री 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री देखिए। और सेकेंड वन का डिग्री इज, दिस इज डिग्री इज 3, sorry, degree order is 3, degree is 2, so this is ruled out because ये थोड़ी ना question। Now the last option, अब आप last option देखिए, it is sine of d2y upon dx, so इसका degree is, such type of expression degree is not defined, so you cannot define the degree of it, though the order of it is 2 times this expression has been defined but its degree is not defined. So which is the correct option? We have only one, that is degree 2 or degree 3 order 2, so B is the correct option. Fine. Now the next question is based on differential, again another question based on differential equation. Now following is the differential equation, आपको इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है, दैट इज सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हाउ डू वी सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, यू कैन सेपरेट द वेरिएबल्स, dy is separated and you can take 4 times integration of e to the index 3x multiplied by dx. Now what is integration of dy? It is y. It is 4 times e to the index 3x upon 3 plus c. अब इस इक्वेशन में भी देखिए कंप्यूटेशन है, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क आउट, तो मेक दिस वर्किंग पार्ट बिसाइड्स इट। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसका वर्किंग पार्ट बिसाइड्स द सॉल्यूशन ही रखिए, कहीं पीछे लास्ट पेज रफ सप्लीमेंट्री शीट में मत करिए, क्योंकि कभी कभी क्या है हम गलती से कॉपी करने में गलती करते हैं तो उसमें हम अपना मार्क्स कटवा देंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग पार्ट शुड बी बिसाइड्स इट। नाउ व्हाट इज द आंसर दैट यू यहाँ पे बोल रहे हैं कि y at x equal to 0 is 7 upon 3. So let us put the value, let's put the value of y is 7 upon 3
for the value of x, which is 0. So x is 0 means we'll put the value of x as 0 here. E to the index 0 is 1. So that is plus c. So this is giving us the value of c. Which one is it? Which this will come out to be 1. So of the options, 1 is there's only one option with constant as 1. And see, that has to be the correct answer. Check it. It's 4 upon 3 e to the index. So quickly you are able to get the answer. Fine. The next question is you have to show that this below is a regular hexagon. What is the regular hexagon? All sides are equal, whose two vertices are joined by this vector. That is, there are vectors given around on the sides of the hexagon. Now, which of the statements is true or are true? Again, here there are three statements given, and of the three statements, you have to select which all statements are correct. So, option A says only two, option B says only three. So, you have to select one. So, that means you will have to go through all these statements. The first statement says that A and D are equal vectors. Now, the definition of equal vectors. When do we say that the vectors are equal? Equal vectors A and B are equal vectors if if the magnitude of A and magnitude of D are equal. That is true because they are regular hexagon, यहाँ तो equal होगा, but same direction. Same direction. Are they in the same direction? No. So that has been ruled out. Okay. Now B and E are collinear. Now what is the definition of collinear vectors? This is R and E are equal. This is for equal vector. Now B and E are collinear. Collinear. When are they collinear? If they actually, you can represent, that is, they are parallel to it, or you can represent it as lambda times of E. B, any vector B, they have any, but they're parallel to, that is, B and E are vectors are parallel to by vector. B is what vector? Yes, this is the vector B, this is the vector E. So they are parallel. Direction may not be same, but they are parallel vectors. So therefore, they are collinear. So this is one correct statement we got. Now the next statement that we have is C, D and G are co-initial. Again, co-initial. See, we have gone through the three definitions. You are revising the three definition. Co-initial vectors का meaning क्या है? Same initial point. That is, all the vectors start from the same point. Now, which are the vectors that they have said? B, G and C. ये तीन vectors जो है, तीनों के starting point एक है. A starts from this. C, A starts from this point. A का direction देखिए इस तरफ है. C starts from here. C का direction इस तरफ है. But G vector है, it is coming in the, it starts from here. So G does not have the same initial. So this is again ruled out. So of the options, which one will have? Only two. That is A option. Only two is correct, but that is option A. Okay. So I'll take up the next question. Now in the next question, it is a question which is based on vector again. में क्या दिया है? Position vectors of P, Q, R are given. Position vectors of P, Q, R of a triangle are given. तो ऐसे स्थिति में it is position vectors. Position मतलब the points are specified. आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं for convenience sake. That is, you have this point as P, this is point Q, this is point R. So हम ये जो point P का, this is a position vector of P, that is coordinate of P can be written as -1, 2 and 4. Likewise, coordinate of Q can be written as 3, 6 and 8. Coordinate of R can be written as 4, 1 and 1. Okay? Now let us read the question further. Which of the following is a vector that represent the median PS? Median PS, that is, आपको सबसे पहले यहाँ पे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा S. तो व्हाट विल द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बी? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करिए जो हमने 10th में पढ़ा था या कोऑर्डिनेट 11th में पढ़ा था. दैट इज ऐड द टू कोऑर्डिनेट्स divided by 2. So 3 plus 7, 4 upon 2 is 7 upon 2. Fine. 6 plus 5, 1 upon 2, that is 7 upon 2. 8 plus 1 upon 2, that is 9 upon 2. So आपका S का coordinate आ गया 10. This is the coordinate of S. How do we write the vector? How is the vector represented? The component of X minus the component of P. So what we have? Vector लिखना है अपने को. It is 7 upon 2 minus of minus plus times I. Likewise, 7 upon 2 minus 2 times J.
plus 9 upon 2 minus 4 times a. Fine. So what is that you'll get from here? 9 on 2i प्लस 3/2j आ रहा है कुछ दिख रहा है आप लोगों को 9/2 और 3/2 का तो यही जो ऑप्शन दिख रहा है तो लेट अस चेक वेदर द लास्ट वन इज 1/2k यस यू हैव द आंसर ये भी एक क्वेश्चन वेयर यू विल हैव टू वर्क आउट ठीक है प्रॉपर्टीज से प्रॉपर्टीज भी मालूम होना चाहिए मिड पॉइंट कैसे निकालना वो भी मालूम होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वर्किंग पार्ट भी चाहिए तो वर्क करके वी हैव डन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the position vector of xy again position vector that is x का coordinate क्या दिया है 1 4 3 y का coordinate is 4 m and 15/2 z का coordinate is 7 minus 4 12 now the points x y z are collinear it's a question based on collinear collinear का मतलब क्या है कि they all lie in one straight line ठीक है so let me mark the points are points that we have are x let this be x let this coordinate be this point be y and this point be z so what does that mean there which of the could be that is the value of m the value of m is this y component the j component for this vector this the position vector we have so which will would be this they are collinear so what condition should we write this now in the previous question I have explained that two vectors x and y are this is xy vector xy is collinear to xz so therefore we have that they will be proportional so proportional means we'll multiply it by some lambda we'll multiply that their components are proportional so let us write down the xy vector what is xy vector so I this is for y vector y point does not have let me write the coordinates of x this is 1, 4, 3, and coordinate of y is 0, 4, m. Coordinate of z is, it is actually this should be I. Sorry, this it is not 0. This is, that is 4, m, and 15/2. I think this is not j, it should be clear. There could be such slight misprints that you can overlook. You will get the answer with this. Check it. Let's see. It is 12. So how do we write vector xy? Vector xy is written by subtracting the components. 4 minus 1, it is 3i. And then plus m minus 4, j. And then it is 15/2 minus 3 times k vector. This is lambda times of xz. But 7 minus 1, 6i. Then 4 minus that is minus 8j. And the last one is it is 12. 12 minus 3 that is 9k. So what information do we have regarding these two parallel vectors? Their components are proportional. That is I component 3 of this vector and 6 of that m minus 4 and minus 8 15 minus that is 9 on 2 and 9 so what do we get all they are all equal this is all 1/2 no so this will be equal to 1/2 so you have the value of m minus 4 is nothing but minus 4 so m comes out to be 0 that's a coordinate of that is a j component of the position vector of y fine so that is value of m. Now the next question is a line makes an angle 135 degree with the positive direction of x-axis and an angle of 300 degree with the positive direction of y-axis. You have to find the angle it makes with the negative direction of z-axis. अब इसमें क्या we have the formula direction cosine का formula है ना cos square alpha means cos square 135 degree plus cos square beta that is cos square 300 degree plus cos square gamma let's take this as gamma. This value comes out to be 1. So cos square 135 is minus of 1/√2 that is 1/. Cos square 300 degree is again 360 minus it is cos square 60 which will be 1/2 which comes out to be 1/, plus cos square gamma which is equal. So what is the value of cos gamma? Cos gamma comes out to be
This is 2 plus 1, 3 upon 4. It's 1 minus 3 upon 4 means 1 upon 4 cos square gamma. So hence cos gamma's value is either a plus, its cos gamma is a plus or a minus 1 upon 2. Now of the options, what is that we have? It is in the negative direction of z axis. Negative direction of z axis means it's reflex angle that we are taking. 360 minus. This corresponds to 60 degree, but it's reflection. But whatever it is ratio will always be 1 upon 2. So the option that we have is 60 degree. Fine. Now the next question is again a question which is based on vector. PQ and PQ is a vector which is perpendicular to QR. PQ is a vector which is perpendicular to QR. That means there are two vectors which are perpendicular to each other. Fine. There are two vectors, and this point that we have is Q. This is P, and let this point be R. So this is coordinate. So position vectors of PQ, again it is given in terms of points. What is the value of Y? A similar question based on it. So what is that condition that we'll use? PQ is perpendicular to QR. So PQ perpendicular to QR means they are perpendicular means PQ dot QR. This will be 0. So again go in for the value of PQ. PQ क्या हो जाएगा? This will be or you can PQ or QR, it doesn't make any difference. It is 5 minus 4, that is I. Then it is Y minus 7 times J. And the last one is 1 minus 1, that is 1 plus 1, that will be 2K. Dot. Now with QR. QR it will minus 2 minus 5, that is minus 7I. 9 minus, that is 9 minus Y times J. And then it is 4 times, that is PK. This product should be equal to 0. So what we have? I, that is minus 7. Then we have plus y minus 7 or 9 minus y plus 6. This is equal to 0. So you have to solve this equation. This will come out to be a quadratic equation, isn't it? Minus y square plus 7 plus minus plus 9y plus 7y will come out to be plus 16y minus 63, and that is minus 64 equal to 0. So you are solving this value, solve this, you get the value of y. Let us factorize it and get it. This, if you see it carefully, you find that this is nothing but y square minus 16y plus 64 equal to 0. So don't we have the factorization? Isn't it y minus 8 whole square equal to 0? This is y equal to. So these are the questions which are based on computation. Fine. Now the next question is question based on linear programming. A linear programming problem, LPP, along with its constraint is given with the minimize z equal to 3x plus 2y. Subject to the condition x is less than equal to 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to. Now again we'll have to draw the Cartesian plane. Fine. This is now x is greater than equal to y is greater than equal to z says that we don't require the negative part of y nor the negative part of x. So we require only the first quadrant. This is the first quadrant that we have. Now there's another line which we have as x is equal to 4. So let me take this line as x equal to 4. Fine. This is the line which is x equal to 4. But this line, this is not the line, it is a x equal to less than 4. That means it is a region that we have. This is the region that we have. So the region that we see is this x y-axis. Again, this is an objective question, so we don't need to explain. We just are working out this to get the answer. Okay, so we have this unbounded region. So how do we work out? So we go for the unbounded region's boundary. We'll go for the points that is there in this. That points are 4, 0, and this is origin. Now with this option,
What will be the minimum value? Let us go for it. 3x plus 2y, put x equal to 0, y equal to 0 will be 0, 0. Then we have when you put x equal to 0, y equal to 0, x equal to 4 and y equal to 0. This comes out to be 12. So that is 3x plus 12y should be less than, that's a line that we'll draw and identify this region. Now let us identify the region. This is x equal to 4. So x equal to, how do we draw the line? 3x plus 2y equal to 12. Put x equal to 0, we get y equal to 6. Y equal to 6 maybe somewhere here. Then y equal to 0, x will come out to be 4. It is this. That means it is a line which is it's a line which is passing through this. Fine. So the region that it says that a region which is 3x plus 2y less than 12. As per this condition, it is the triangular region. Now, this is an unbounded region, and then we go in for the minimum value for the minimizing this optimum function, objective function. And if you find there's any common region between the two, there is no solution. We find that minimization of 3x plus 2y with this condition less than 12 and the unbounded region, they have a common region, is this particular region which is common. So therefore, the option that we have is it has no solution. So the next question we have is a question which is based on probability. M and N are two events such that probability of m restricted to n is given. Probability of m restricted to n, what condition do we have? Probability of m restricted to n. This is probability of m intersection n upon the probability of n. So using this formula, can you get the value of something? We get the value of that is this is 0.3, that is equal to probability of m intersection n multiplied by the probability of n, that is 0.4. So what is the value of probability of m intersection? That is 0.12. So we got the value of probability of m intersection n. Now the question is not to find the value of m intersection, just observe it carefully. See, it is n complement. Now how will you use this information to get the value of m complement? I'll prefer to take up the Venn diagram. I'll make a rectangle here. Fine. So this happens to be the universal set. In that, I'll mark two sets M and N. These are two sets M and N. So one is M. So what is M intersection N? Complement. Intersection N complement. N complement is N. If I take this as N, the N complement is this region. It is this region. And its intersection with M. M is this set. So which is the common region that you find? The region that you have is this particular region, that is this region, isn't it? So how do we get the answer to? Let me mark this as some quantity. It is probability of x you are finding. Probability of m intersection n complement is nothing but the probability of m minus probability of m intersection n. Probability of m is already there. It is 0.2 minus 0.12, which will be equal to 0.08. 0.0. See, that's the option you have. So the help of Venn diagram, we are able to evaluate this. So, so are we not touching the minor informations that is there in each of these questions? So this is definitely going to refresh or help you to revise the topics. Okay. Now next is a graph. Now next question you have a graph is, and it is a question based on assertions and reasonings. Assertion and reasoning means assertion is a statement, a reasoning is attached to it. So you have to identify of the four statement which one is correct. Now the first, this is a question based on function. Function is defined for all real numbers except 0 to real number. That is the codomain is all real numbers, range is except 0. When you look at this expression, you find that
This expression is not defined for f of 3 nor f of minus 3. It's not defined. But when you see the graph, you'll find the graph is something related to this is equivalent to the function 1 upon x. What does that mean? It says that they have defined, there has to be this information which is missing. So please add on this. I'll be adding on this. It is saying that it is 9 minus x square upon 9x minus x square. This is when x is not equal to plus minus 3. And this is a 1 upon x when x is equal to plus minus. It is simply 1 upon x. That's all. So that is how they have made this continuous. So that is, isn't it defined for x equal to 3 as well as minus 3? The part of the curve is defined. So therefore, that means the graph has to be equivalent. So I'm redefining it. Now let's read the assertion. The function is not onto. Function is not onto means we do not have for every value of this related to r. That is every value of r. When do we have r? Now this function, we find that r onto is, how do we prove that it is onto? That is every value of the codomain should have a pre-image. Now what do we find the codomain as? Can you define the reciprocal of 0 or zero's reciprocal? Does the curve intersect y at y-axis, or is the curve intersecting at x-axis? Intersecting x-axis, that means the curve is defined for y equal to 0. So is y equal to 0 defined? No. So how can it be onto function? That means no, for no value of x, it is 0. That is reciprocal of no number is 0. Hence, f is not onto is a correct statement. Now, 3 belonging to R has a pre-image. As I said, this is a question based on the above function. It should have been above graph. It is not function. It is based on above graph. You have to answer this question. As per the graph is defined for f of 3. F of 3, that is gx of some value of x is 3. So what is that value? That is for x is equal to 1 upon 3. So look at this value of 3. You have x as 3 somewhere here. So therefore it is true. So therefore what is true? A is has no pre-image is the assertion. It has no pre, that is a false statement. So which one is correct? C statement. That is A is true but R is false. Okay. So now the last assertion part. So the last question of section A. The function is again, it's again a question based on function. It is modulus of x minus 6 multiplied to cos x is differentiable for all real numbers except 6. Differentiable for all real numbers, what does it say? That you take any point on the left hand side and the right hand side of the curve, it will always be differentiable. So again, how will you justify this? It is not subjective question, but it is to make you understand how will you justify so that you can answer this. So this is written as x minus 6 with cos x for x greater than equal to 6. And then it's minus of x minus 6 cos x for x less than 6. Now it is already saying that remove the point 6 from it. The rest of the points x minus 6 cos x, both the functions are such that they are differentiable. So it will be differentiable. Likewise, for the less than part, my x minus of x minus 6 and cos x, both are differentiable. Hence, the product of it will be differential. So this is a correct statement. But the reasoning that they have given, if f is a continuous function at C, then it is also differentiable. That is not true because it is continuous. That is true. It is continuous function. I'll just help you out with this curve. This is just a minute. I'll just take out this curve. This is in this, it will be easy for you to understand. We have the curve for modulus of x minus 6
times cos x. Let's look at this function closely. What do we find around this point? What do we find around this point? That is at point 6. See the curve, what is happening? The derivative changes its sign. On the left hand side of 6, it is negative, and on the positive side of 6, right hand side of 6, it is positive. So this particular part of the curve, this point x equal to 6, it is not differentiable, though it is continuous. You can very well see the continuity part. Though it is continuous, it is not differentiable. So the statement that we have as reasoning, that is for every continuous function, it is differentiable, it is. So this statement is also says that A is true but R is false. The correct option is C. So I suppose that you must have understood certain points of each topic through this video. Go through it, the concept will definitely be clear. I'll be putting up the next section's video very soon. Thank you all.